And this procedure is available in India, even outside India, apart from US and some parts of Europe, it's not widely available. So that's one. And the major advantages in young patients, which unfortunately is a big group in our country. Lot of our patients are below 60. They are the breadwinners. They need to get back to work yearly. So this gives that advantage. Within 2 weeks, they can be back to normal work, full activity. Unlike open surgery where it can take 3 to 6 months depending on individuals. So that's one thing. And in other patients with other complex comorbidities or elderly, it is a boon like him where they would not have had other surgery, open surgery, could not withstand or a lot more complications. In that group of patients, it's a real medical boon for them to recover quickly with least complications. Can you please differentiate about the your cardiac surgery and robotic cardiac surgery? So the major advantage compared to open surgery is open surgery we have to cut this bone, sternotomy. That takes 3 to 6 months to heal depending on age group because it's a fracture we are creating. That causes pain and that leads to longer hospital stay, about 7 to 10 days, and longer recovery. Back to normal is between 3 to 6 months depending on age. And the risk of infection, bleeding is also slightly higher. Whereas with robotic surgery, there is no bone cut. There are 2 holes on both sides and there is no cut in the legs, which is also a big problem in diabetic patients with healing. They only have 2 holes in the chest. One will be a 5 centimeters cut as I showed. Just with that, the whole surgery is done. Multiple blockages or valve surgeries. They go home within 3 to 4 days. More than that, they recover to full normal activity within 2 to 3 weeks. One more question, sir. Please elaborate about CABG. What is it? CABG means coronary artery bypass graft surgery, which means when there is a blockage in the blood vessel supplying blood to the heart muscle. So there are 2 problems we are talking today. One is valve problem. Valves are located within the heart. Heart is like a bag of heart muscle. Within that bag there are 4 chambers. For blood to flow in a particular direction, there are 4 valves. If there are problems with the valves, we open the heart and deal with the valves. That is valve surgery, which is also done through robotic assist. The other common problem in our country is coronary artery disease, which is blocked in the blood vessels supplying blood to that bag of muscle. That is on the heart, not within the heart. So that is also done through robotic assist with the heart beating. So this is called, with stenting we go through the blockage and open it like a spring as I showed. Whereas with bypass surgery we go across the block like building a bridge across a traffic jam. We go across the block with their known native vessels because there is no foreign body involved. That lasts the longest, especially in diabetics and patients with poor heart function. That's the reason it is superior to stents in patients. सर्जरी अभी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी सब जानते हैं, रोबोटिक हार्ट सर्जरी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, और लोग में वो फियर भी बहुत ज़्यादा है कि अरे हार्ट को खोलना है तो वो तो बहुत ही मेजर सर्जरी है। ये सर्जरी जो ये करते जिस वे से करते रोबोटिक हार्ट सर्जरी, सबसे पहला डिफरेंस दोनों में है कि आपका जो सर्जरी का टाइम, सर्जरी का प्रोसीजर जैसे ये कर रहे हैं उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका जो स्टे है, इसमें पूरा जो ओपन हार्ट सर्जरी जो करते हैं जिसे हम लोग CABG कहते हैं, उसमें करने से क्या होता है कि पूरा जो स्टर्नम जो सामने की जो हड्डी है उसको जो खोल के किया जाता है उसमें 3 से 4 महीना लग जाएगा आपको पूरा रिकवरी। एंड करेक्ट? सो एंड ये जो है, ये जो सर्जरी है इसमें सिर्फ 2 से 3 दिन के ही हॉस्पिटल स्टे है। उसके बाद आपका 2 से 3 हफ्ता ही वहाँ पर पेशेंट को रहना है और उसके बाद पेशेंट अपने काम पे बिल्कुल जा सकता है, कोई ये नहीं। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा लाइफस्टाइल, इंडियन लाइफस्टाइल है, जितना इंसिडेंस है आपका जो इसका कार्डियक इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसका क्यों है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और सर ने जैसे बताया कि क्या क्या कॉजेज़ है सब चीज़ का, तो इसके चलते लाइफ
जो भी इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं जिनका ये है, जिनको इस तरह की है, हम लोग ने अपोलो के थ्रू ये किया है कि सर को हम लोग बीच में मिलाएंगे, जो भी कंसल्टेशन ज़्यादा जो भी है सारा वो चीज़ होगा, सारा यहाँ से हम लोग सारा केयर पेशेंट्स के सारा केयर सारा कुछ जो इनकी टीम करेंगी, वहाँ जाके बस सर्जरी कराना है, सर्जरी करा करके और वहाँ के स्टे, वहाँ का ये मेनली क्या है कि आपका टाइम का कट है, कॉस्ट का कट है, ठीक है, और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन में पेशेंट्स के कोऑर्डिनेशन जो वहाँ पर जाके पेशेंट को स्टे में जो तकलीफ होती है, अपॉइंटमेंट में तकलीफ होती है, ये सब होती है, वो सब कट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपका ट्रीटमेंट, वो आपका सबसे इजी वे ऑफ रोबोटिक ट्रीटमेंट आपके जो है पेशेंट का जो ये है ट्रीटमेंट होगा वो जो सर करेगा। अच्छा मैम, क्योंकि इसका दाम बहुत जो भी है चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मली आयुष्मान झारखंड में जो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उन लोगों के लिए आयुष्मान है, और वो लोग अगर ऐसे ओपन सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो उसमें 5 लाख तक रुपए का जो फायदा होता है, कितना 7 से 8 लाख, 5 लाख रुपए है। तो ये रोबोटिक सर्जरी में ऐसा पेशेंट को मिल पाएगा कि आयुष्मान कार्ड का यूज कर सके, इस्तेमाल Currently we are not able to do it in that because of the cost. Currently no. अभी करेंटली जो है आयुष्मान के थ्रू रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते। मतलब भविष्य में ऐसी कोई उम्मीद है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। So slowly they are including one by one. क्योंकि अभी देखिए कोई They may include in future, but currently no. करेंटली अभी ये भी है ना कि सिर्फ अभी अपोलो में हो रहा है, हमारे अपोलो चेन्नई में हो रहा है, अभी इंद्रप्रस्थ में होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये होगा तो फिर हम लोग उस पर भी आ सकते हैं कि आयुष्मान के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर नॉट डूइंग। ठीक है, ओके डॉक्टर परिचय दे देंगे। Not in any specialty, not just cardiac. National is not providing for robotic in any specialty. It may change in future. ठीक है मैम, ओके। आपका परिचय मैडम? हाँ, मैं डॉक्टर रेशमा सिंह हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपोलो। ठीक है, ओके, थैंक यू। The patient, if they want to ask